Hello everyone, welcome to part 51 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our special condition and diet therapy part of the syllabus. So let's start with today's first question. For acid reflux management, which type of food is generally recommended to limit? Option A, high fiber food. Option B, high fat foods. Option C, high protein foods. ऑप्शन डी लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाई फैट फूड्स. हाई फैट फूड्स कैन रिलैक्स द लोअर esophageal sphincter, the muscle that prevents stomach content from lowering back into esophagus. When the LAC relaxed, it increases the likelihood of acid reflux, which can cause heartburn and discomfort. Additionally, high-fat meals may slow gastric emptying, further exacerbating the acid reflux syndromes as well. So let's ask the next question. Which diet-based approach has shown evidence in delaying the progression of Alzheimer's disease? Option A, low FODMAP diet. Option B, ketogenic diet. Option C, DASH diet. ऑप्शन डी माइंड डाइट. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी माइंड डाइट. जो लो फूडमैप डाइट है ये हम जनरली आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और स्मॉल इंटेस्टिनल जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये सब में देते हैं. लो फूडमैप डाइट का एग्जांपल है बनाना, कैरट, स्पिनच ये सब. और बाकी जो कीटोजेनिक डाइट है, कीटोजेनिक डाइट आपका हाई फैट डाइट होता है, हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट वाला. इसमें आपका फैटी फिश, एवोकाडो, बटर, लीफी ग्रीन्स एक्सेट्रा. और ये जनरली एपिलेप्सी वाला पेशेंट और टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी वाला पेशेंट को हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं. देन आपका डैश डाइट तो हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस किया. ये हाइपरटेंशन को आपका रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये जनरली सोडियम लेवल को रिड्यूस करने का बात करता है और पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करने का बात करता है. और जो माइंड डाइट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट एंड डैश डाइट होता है. और ये ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जाना जाता है. जैसे आपका एल्जाइमर डिजीज, कॉग्निटिव डिक्लाइन एक्सेट्रा को प्रिवेंट करने के लिए हम माइंड डाइट सजेस्ट करते हैं. इसमें बेरी, ग्रीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपका नट्स, होल ग्रेन, ओलिव ऑयल एक्सेट्रा जनरली दिया जाता है. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स in the diet of patient with pancreatitis because option A, MCT requires bile acids for absorption. Option B, MCTs are absorbed directly into lymphatic system. Option C, MCTs are absorbed directly into portal vein bypassing the pancreas. Option D, MCT increases pancreatic enzyme activity. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, MCT are absorbed directly into the portal vein bypassing the pancreas. MCTs bypass pancreatic processing by directly entering into the portal vein without needing bile salts or pancreatic lipase, reducing pancreatic workload. This is beneficial in conditions like pancreatitis and fat malabsorption syndromes. So चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the primary reason for limiting potassium in a diet for a patient with end-stage renal disease? Option A, to prevent muscle cramps. Option B, to reduce the risk of hyperkalemia, which can cause cardiac issues. Option C, to decrease blood pressure. Option D, to enhance digestion. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरकालेमिया व्हिच कैन कॉज कार्डियक इशू.
In end-stage renal disease, impaired kidney functions reduces the potassium excretion, leading to buildup of potassium in the blood. This condition is known as hyperkalemia that can cause muscle weakness, cardiac arrhythmias, then even life-threatening cardiac arrest, etc. So, चलिए देखते हैं हमारा इसका next question. In patients with hemochromatosis, which dietary adjustment is essential to manage iron level? Option A, increase intake of vitamin C rich foods. Option B, avoiding high iron foods and limiting vitamin C intake with meals. Option C, increase intake of red meat and spinach. Option D, increase intake of fortified grain and legumes. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अवॉइडिंग हाई आयरन फूड्स and limiting vitamin C intake with meals. The condition of hemochromatosis involves excess iron absorption, so limiting iron-rich foods and vitamin C, which enhances the iron absorption, is essential in such cases. So we must manage the iron absorption and iron intake in such cases. So चलिए देखते हैं इसका next question. A patient with a recent ileostomy requires which primary dietary adjustment? Option A, high fiber intake to support digestion. Option B, low residue, low fiber diet initially to minimize bowel irritation. Option C, increase fluid intake with low carb foods. Option D, high protein, low fat diet. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, low residue, low fiber diet initially to minimize bowel irritation. इलेक्टोमी वाला पेशेंट को हम लोग इनिशियली लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट ही प्रोवाइड करते हैं to reduce the stool bulk and minimize the bowel irritation as well. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. आप ये स्टडी मटेरियल जो है इसको आप टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं और इसको इस पार्सेस भी कर सकते हैं. Which nutritional strategy is often used in patient with chronic heart failure to prevent fluid overload? Option A, high sodium, low protein diet. Option B, fluid restriction along with sodium restriction. Option C, low carbohydrate, low fat diet. Option D, low fiber, high protein diet. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, fluid and sodium restriction helps prevent edema and fluid overload in heart failure patients. So option B is the correct option. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the primary purpose of using mini nutritional assessment in clinical settings? Option A, to prevent macronutrient deficiencies. Option B, to screen the risks of malnutrition in elderly patients. Option C, to increase dietary fiber intake to measure body composition. Option होगा करेक्ट इसका ऑप्शन बी, to increase risks of malnutrition in elderly patients. जो हमारा मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, it is a validated screening tool designed to quickly assess nutritional risks, particularly in elder adults. It elevates factors like dietary intake, weight change, mobility, and psychological health to identify those at risk of malnutrition and undernutrition. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. For managing type 1 diabetes in children, the carbohydrate counting method is often used. What is the primary benefit of this method? Option A, increase calorie intake. Option B, maintains high protein diet. Option C, helps adjust insulin doses based on carbohydrate intake. Option D, reduces fat intake. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, helps adjust insulin doses
based on carbohydrate intake. Carbohydrate counting allows us for more precise insulin dosing and improved glycemic control as well. So चलिए देखते हैं आज का next question. Which dietary modification is beneficial for a patient with celiac disease? Option A, high wheat, low high gluten diet. Option B, gluten-free diet with attention to cross-contamination. Option C, high fiber, low protein diet. Option D, increase intake of barley and rye. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्लूटेन फ्री डाइट विथ अटेंशन टू क्रॉस कॉन्टामिनेशन. जो हमारा सेलिएक डिजीज वाला पेशेंट होता है, they must strictly avoid gluten, the protein found in wheat, barley and rye, as its consumption triggers the autoimmune response that damages the intestinal lining and that can lead to malabsorption of nutrient and nutritional deficiency. Apart from that, gastrointestinal syndromes and systemic effects as well. Adherence to a gluten-free diet is essential for managing the condition and preventing the complications related to celiac disease by those patients. So, आज का discussion में इतना ही था friends. Hope you like this session and thank you for watching the video.